लॉ में एडमिशन लेने वाले हैं बच्चे, उनके लिए है क्लैट के लिए, जो क्लैट या एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है फॉरेन लैंग्वेज की कुछ फ्रेजें हैं। ये एक प्रकार से लीगल टर्मिनोलॉजीज ही है। इन ऑर्डर टू क्रैक सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक क्लैट एंड अदर ला एंट्रेंस एग्जाम, अ गुड वोकैबुलरी ऑफ सम फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स इज एसेंशियल। क्लैट लव्स चैलेंजिंग यू विथ वर्ड्स ऑफ अ डिफरेंट ओरिजिन टू टेस्ट योर नॉलेज। क्लैट में ये सब चीज़ें जो है पूछते हैं। अब एंटिको, अब एंटिको मतलब फ्रॉम एंशियंट टाइम, यानी बहुत प्राचीन समय से। अब एंटिको, अब इंसिसियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरुआत से। एब्जुरे टू रिनाउंस ऑन ओथ और अफर्मेशन मतलब शपथ लेना। एक्टा एक्सटोरियोरा इंडिकेंट इंटेरियोरा सिक्रेटा, एक्ट्स इंडिकेट द इंटेंशन। ठीक है। एक्टस लेगिस नेमिनी फैसिट इंजुरियम, लॉ होल्ड्स नो मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ गॉड। एक्टस नॉन फैसिट रेनम निसी मेंस सिट रिया, अ गिल्ट माइंड इज नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। एक्टस रियस मतलब रॉन्गफुल एक्ट, द फिजिकल एक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग इन द क्राइम। अब एड हॉक, एड हॉक का मतलब होता है फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। एन आइडम ऑफ द सेम माइंड। एड रेफरेंडम फॉर फर्दर कंसिडरेशन। एड रेम टू द पॉइंट। बेलीफ, a subordinate officer of the court who execute writ other court's order. Bona fide मतलब in good faith या honestly. Bona vacantia यानी goods that do not have an owner, यानी कि वह वस्तु जिसके पास कोई ओनर ना। जनरली they go to the finder. Boni judici est ancillor jurisdictionis. It is the part of good judge to enlarge his jurisdiction. अब ये है certified in good faith honesty. causa sine qua, factors essential to the occurring of event. Caveat, an order given to the officer may let him be aware. Caveat emptor यानी let the buyer be aware, यानी कि खरीदार को अवेयर करना। लेट कैविएट वेंडेटर, लेट द सेलर बी अवेयर। ये सब क्वेश्चंस आते हैं जो है पूछ देता है। कैविएट एम्पेटर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर। कैविएट वेंडेटर का मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। कैविएट विएटर मतलब लेट द ट्रैवलर बी अवेयर, ट्रैवलर बी अवेयर। सर्ट्योररी, एन ऑर्डर ऑफ हायर कोर्ट विच क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। जो हाई कोर्ट है, हायर जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वेश्चन कर देता है। कंपोस्ट मेंटिस मतलब आप साउंड माइंड, जो साउंड माइंड का हो। कॉन्सेनस नॉन कॉन्क्यूबिटस फैसिट मैट्रिमोनियम, इट इज़ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज नॉट देयर कोहैबिटेशन विच कंस्टिट्यूट अ वैलिड मैरिज। डिफैक्टो का मतलब इनफैक्ट, डिजूरे का मतलब इन लॉ, डी नोवो का मतलब न्यू, डिक्री का मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रोनाउंस्ड आफ्टर हियरिंग द केस। डिक्री निसी कंडीशनल डिक्री। डिफिजिबल राइट विच कैन बी डिफीटेड। डोली कैपेक्स कैपेबल ऑफ क्राइम, डोली इनकैपेक्स इनकैपेबल ऑफ क्राइम। इसे इन ब्लॉक ऑल एट द सेम टाइम। अब ये क्या लिखा हुआ, चलिए। इन अ बॉडी एक्स कंट्रैक्टू अराइजिंग आउट ऑफ कंट्रैक्ट। एक्स क्यूरिया आउट ऑफ कोर्ट। Ex delicto arising out of wrong. Ex gratia as a favor. Ex nudo pacto non oritur actio, an action not arise from a bare promise. Factum probatia, facts that which are given in evidence to prove other facts in crime. Hoax pass, tactless mistake. Flagrante delicto, in the commission of the offense. Force majeure, beyond one's control. G.
general dictum, generaliter, ist interpretandum. An general expression is to be construed generally. Generalia specialibus non derogant. General statements provision do not derogate from special statements या provision. Generalibus specialia derogant. Special things derogate from general. Grammatica falsa non vitial certum. Grammatical errors does not vitiate writing. S. habeas corpus, a court order that direct the person to produce before a court who has been illegally detained beyond 24 hours before. 24 घंटे के पहले जो भी मतलब कि बॉडी को प्रोड्यूस करना है, habeas corpus का मतलब होता है बॉडी लाना जो है कोर्ट के सामने. होनोरिस कॉसा एज मार्क ऑफ स्टीम. इग्नोरेसिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट. Ignorance of law has no excuse. Impasse and insoluble difficulty. Incuria in open court. In loco parentis, in the place of a parent. In memoriam, in memory of. In peri delicto, where both parties are equally at fault. In peria materia, where two enactments have a common purpose. In an analogous case. In personam, proceeding directed against or reference to a specific person. In re, in the matter of. In rem, right available against the word at large. In situ, in its original situation. In toto, wholly. Infra, below. Injuria sin damnum, illegally injury without actual damage. J. Just right, just natural, law of nature, natural justice. Judices deity, judges given or appointed. Judex tenure imperatori. Judicium sum, a judge is beyond to communicate his decision. Judicandum est legibus non exemplis. Judgment must be given by the court, not by the laws, not by examples. नहीं, चाय नहीं पियेंगे बापू. Judicia posteriora sunt in legi fortiora. Later judgment are stronger in law. Just respisit equitatem. The law pays regard to equity. Just tempore, at the right time. L. Laissez faire मतलब doctrine of non interference by state in economy. Lex का मतलब statute. Lex fori का मतलब the law is law of the court in which the case is tried. Lex loci, the law of a place. Malefied, with bad faith. Mandamus, we command. Manifesta probation non indigent. Things manifest do not require proof. Mens rea, guilty mind. Mens ne intermediate. Mens profits, damage payable by trespassers who have stayed in possession after right to occupy land has ended. Modus operandi, mode of operating. Mutatis mutandis, with necessary changes being made. Hence, nemo tentior, no man can be compelled to incriminate himself. Nisi, ineffective
unless person affected fails to show cause. Non-assumpsit, he did not promise. Non-compos mentis, not of sound mind. Non-absentee, notwithstanding. Noster a sources. Meaning of words can be gathered from context. Nositter a sources. Meaning of a doubtful words may be ascertained by reference to the meaning of words associated with it. Obiter dicta, remark of a judge. Obiter dictum, judge's opinion of contingentium and on account of similarity. Occupantis fiant derelicta, things abandoned become the property of the occupier. Omne verbum deore fidelly cadit in debitum. Every word sincerely spoken will constitute obligation. Omnia presumpter, every personam is made contra spoliatorium, against the wrongdoer. Optimus interpres reum usus, usage is the best interpreter of things. Or tenus, by words of mouth. Pice per excellence, eminently. Pendent light, pending litigation. Per as stated by per annum, by the year. Per capita, individually. Per curiam, by the court. Per incurium, wrong decision by court, by oversight. Quse quantum merit, as a person earned. Quas, matlab making a null or invalid or making into legal proceeding. Quasi contract, a contract between a party comes. Quasi judicial, sharing a quality of and approximating to what is judicial. Qui facit per alium facit per se, he who acts through another is deemed to act in person. Qui per alium facit per cipium sepsum facere, he who does an act through another is deemed in law to do it himself. Quid pro quo, something or for something. Qui warranto, order of a court in the form of writ directing the person in authority to show by what right he claims it. Quorum, minimum number of persons necessary for conduct of proceeding of parliament. Qui jure, by what right. Ars reason detre, reason for the existence of a thing. Rapprochement, restoration of harmonious relations. Ratio decidendi, a principle laid down by the court in deciding a case. Rebus stantibus, binding bill, circumstances remain the same. Res geste, the fact so connected with a fact in issue so as explained its nature. Res judicata, a case already decided. Esse salus populi est suprema lex, the welfare of the people is the paramount law. Sin die indefinitely. Sin qua non, indispensable condition. Space successiveness, mere hope of succeeding to property. Stare the principle that decision of courts in previous cases must be followed in subsequent cases of similar nature. Status quo, to maintain the present state of affairs. Statute, an act of parliament. Sub judice,
अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन और इन कोर्ट्स ऑफ ट्रायल subpoena an order of a court to a person to appear and give evidence before it, sui generis, the only one of its kind, suo motu on its own, supra above. टी से टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग होता है, ट्रेसपास का मतलब टू पास बियॉन्ड, ट्यूरपिस क्योसा का मतलब होता है बेस ऑन विच नो एक्शन कैन बी फाउंडेड, द मैक्सिम बीइंग एक्स टर्पी कौसा नॉन ओरिटस एक्टिस, यू से यू बे रिनेफाइड अब ऑफ द मोस्ट गुड फेथ, यू बी जिस रिमेडियम वेयर देयर इज a right there is a remedy, ultra virus मतलब beyond the power, we say wide मतलब refer to vigilantibus non dormientibus jura suenient, the law assists those who are vigilant, not those who sleep over their rights, which measure irresistible force. वाइड का मतलब हैव नो लीगल इफेक्ट, वाइड अब इनिशियो मतलब वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ये एक्सरसाइजेज हैं।